Hi everyone, and welcome to my YouTube channel, The Working Traders Art. We'll be talking about कि अभी कहाँ पे स्टॉक है, क्या वो सपोर्ट जोन है, क्या वहाँ से बाइंग कर सकते हैं. एंड अगेन वी आर गोना टॉक अबाउट फ्रॉम टू पर्सपेक्टिव. एक जो थोड़ी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, और देन सेकंड विल बी शॉर्ट टर्म ट्रेडर. शॉर्ट टर्म से मतलब है हु आर टेकिंग दिस ट्रेड फॉर मे बी 3-4 days to up to a month, राइट. क्योंकि नेक्स्ट एक्सपायरी अक्टूबर मंथ एक्सपायरी जस्ट स्टार्ट हुई है, हमारे पास पूरा महीना पड़ा हुआ है. सो वी विल बी डिस्कसिंग स्ट्रेटजीज विच वी कुड यूज इन दिस एक्सपायरी ऑल्सो. ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्ट्रेट अवे लेट्स गो टू दी कैंडल चार्ट. ऑलराइट, तो इस कैंडल चार्ट को सबसे पहले मैं एक वीकली चार्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ. तो यहाँ पे आप देखोगे स्टॉक ने एक डबल टॉप टाइप का बनाया था, एंड सिंस देन it went to a complete negative territory with other IT stocks, क्योंकि अमेरिका का मार्केट अच्छा नहीं था. and as we know कि most of the income of our IT companies are coming from the US, right. and then second one is Europe. Again, Europe is not doing great. तो इन जनरल थोड़ा मार्केट सेंटिमेंट डाउन था, तो स्टॉक भी नीचे गए. एंड नाउ बिकॉज नाउ मे बी वी आर थिंकिंग कि अब बॉटम हिट हो चुका है, एक बेस बनने लगा है, राइट. यूएस का भी मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज हो गया है फ्रॉम इन्फ्लेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सो दैट कैन ऑल्सो बी सीन इन दिस स्टॉक. ओके, नाउ एक बार इस चार्ट में मैंने वीकली चार्ट ड्रॉ किया है. लेट्स जस्ट सी कि फिलहाल वेयर आर द सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस. तो स्टॉक वाज मूविंग इन अ रेंज बाउंड मैनर फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ. ओके, इसके बाद इसने एक ब्रेकआउट दिया था. एंड दिस इज द सॉर्ट ऑफ रेंज. विप्रो काफी टाइम से एक छोटी रेंज में मूव कर रहा था विद द रेजिस्टेंस ऑन द हायर साइड. तो एक बार वो रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं कि क्या रेजिस्टेंस था ट्रेंड लाइन वाला, एंड अभी उसको साथ वेयर वी आर वी इन टर्म्स ऑफ दैट, राइट. तो आप देखोगे कि यहाँ पे मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ थोड़ा सा, विल बी बेटर, राइट. सो देयर वाज दिस सॉर्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऑन द अपर साइड, जो कि काफी टाइम से इसको परेशान कर रहा था. फाइनली दिस स्टॉक गेव अ डिसेंट ब्रेकआउट हेयर, राइट. उसके बाद अगेन थोड़ा रेंज बाउंड रहा एंड फाइनली इट मूव्ड अप along with the other IT stocks. एंड इन द लास्ट फ्यू वीक्स जब अच्छा मार्केट में भी करेक्शन आया है, सो दिस स्टॉक इज आल्सो सीन डिसेंट करेक्शन, एंड नाउ इट इज अगेन टेकन अ सपोर्ट राइट हेयर. ठीक है, तो अपने प्रीवियस ट्रेंड लाइन के पास ही वीकली क्लोजिंग आया है. सो दिस इज द फर्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दैट वी कैन सी. अब सेकंड अगर देखना है तो एक इसको भी चेकआउट कर लेते हैं, which was created by Wipro. और इस बार जब स्टॉक ने थोड़ा अपवर्ड साइड मूवमेंट दिया, so this is where again it kind of faced the resistance और यहाँ से वापस नीचे आया, right? तो sort of एक नई रेंज दिख रही है यहाँ पे हमको, जहाँ पे स्टॉक ट्रेंड कर सकता है. बट दैट टोटली डिपेंड्स कि अभी जहाँ पे है वहाँ से बाउंस बैक आना चाहिए. अगर इसको वापस ने तोड़ दिया, सो देर आर गुड चांसेस कि हो सकता है ये स्टॉक वापस से अपने नेगेटिव जोन में चला जाएगा. अगेन विल हैव टू वेट टू फॉर दिस टू कम अप अगेन और ओवर आवर ट्रेंड लाइन. इस स्टॉक के साथ व्हाट आर द पॉसिबल टारगेट्स जो हम रख सकते हैं, एंड व्हाट आर द रिस्क दैट वी कैन टेक, और व्हाट आर द ट्रेड्स दैट वी कैन टेक. ऑलराइट folks, so first of all let's assume two things, right. दो ही चीज हो सकती है मार्केट में, either the stock will go up or down. अब अगर यहाँ से अप जाता है, राइट, तो इन फर्स्ट केस आई मीन हमारा टारगेट काफी क्लियर है, दैट विल बी दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन which is coming close to around 440. Current market price is close to 405, right. So there is a good decent scope for an uptrend for 8 to 9%. अगर आप इसको अभी लेते हैं तो with a stop loss of maybe below this candle which is around 401. So risk to reward is very good. You are having upward side around 38 points, while on the downward side you have 5 to 6 rupees. So 1:6 1:7 का अच्छा risk reward बन रहा है इसके अंदर, from which it can be bought, right. Again you have to wait for a confirmation candle, यहाँ से ऊपर green की तरफ आना चाहिए, तो maybe
if it gives a good green candle, उसके बाद आप buy कर सकते हो. So or more risky traders can initiate the buy right now, right, with a very strict stop loss of below this candle on a weekly closes basis, right. So that's the first target. अब इसके बाद अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग चलता है, स्टॉक स्ट्रॉन्ग चलता है, 442 इसने ब्रेक कर दिया, देन व्हाट्स नेक्स्ट? देन आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट टारगेट, जहां पे इसके दो स्विंग लो बने थे प्रीवियस वंस. सो लेट मी जस्ट ड्रॉ इट फॉर यू. So it comes out to be close to 544, which is huge. मतलब यहाँ से 100 rupees, around 20 more percent from 440, right? So that's gonna be a long-term target. Probably next 2 to 3 months we can have a look at it. Only if it gives a breakout above 445 and stabilizes over there, right? So this is in terms of positional and uh, शॉर्ट टर्म टारगेट्स बोथ, राइट. तो यू कैन ट्रेड अकॉर्डिंगली, जो भी आपका ट्रेडिंग करने का स्टाइल है उसके हिसाब से आप कर सकते हो. एंड व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना लीव दीस लेबल्स ऑन द स्क्रीन फॉर यू, यू कैन फॉलो, राइट. एंड अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे जाता है तो प्लीज बी केयरफुल, वापस से एक डाउन ट्रेंड में एंटर कर सकता है, राइट. ऑल्सो फ्रॉम द रिस्क, ऑल्सो फ्रॉम द ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पर्सपेक्टिव या रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव, जो ट्रेड, जिस टाइप के ट्रेड जनरली मैं लेता हूँ, मैं एक बार आपको सेंसिबल में ले जाके एक बार वो दिखा लेता हूँ कि रिस्क रिवॉर्ड क्या रह सकता है अगर हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में इसका ट्रेड इनिशिएट करेंगे, राइट. वी कैन ऑल्सो बाय इन कैश डेफिनेटली, बट people who do F&O, right, for this is a strategy which they can use. This is called as covered call, right. इसमें मैं क्या करता हूँ कि I'll buy the future of a stock at support या फिर जहाँ भी breakout आता है, and I'll sell a slightly higher call, so that keeps me slightly hedged on the downside, right. And I follow a strict stop loss and targets for my trades. तो in this case अभी हम sensible पे आ गए हैं and Wipro is open here, so let's go ahead and build a new custom strategy. As मैंने कहा कि अभी current price के ऊपर, let's say if you decide to buy Wipro future, right, for October month, हमने buy कर लिया, and let's go back again to future. Now what we can do is हम slightly out of the money एक ऑप्शन सेल करके चल सकते हैं, कॉल ऑप्शन, बिकॉज वी आर बाइंग फ्यूचर, वी कैन सेल कॉल ऑप्शन, राइट, ऑफ स्लाइटली हायर वैल्यू, थोड़ा आउट ऑफ द मनी. जो बहुत ही कंजर्वेटिव ट्रेडर्स हैं वो एट द मनी ऑप्शन भी सेल करके चल सकते हैं, राइट. सो इन दिस केस व्हाट आई विल डू इज आई विल सेल an option for 420, a call option for 420 in this particular case, right, which is around 7 rupees. So it is giving me a comfort of around 1.5% on the downside, which is not a lot, but given that we are right at the trend line, right, so probably we can take this. Let's say if you are very conservative, you don't want to take 410, तो 420 आप 410 भी ले सकते हो, बट पहले देख लेते हैं 420 में क्या रिस्क रिवॉर्ड रहेगा, राइट. सो इफ यू विल फॉलो हियर ऑन दिस स्क्रीन, आप यहाँ देखो, तो इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी टोटल कैपिटल फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायर्ड इज अराउंड 1.3 lakhs, right, and the maximum profit that we can make is 26,700. वो तब होगा जब stock closes Wipro limited at the time of expiry is at 420 or above 420, right. उससे क्या होगा कि we will be making on future, we will be making around 14 rupees, right, because right now we are at 406 and 420, तो 14 rupees हमको वहाँ पे futures में मिलेगा, and जो भी option का value है वो पूरा zero हो गया होगा, so that again 6 rupees additional we'll get, so more or less we'll get something around 20 rupees overall. इसमें थोड़ा सा प्रीमियम भी होगा फ्यूचर का, which we'll have to deduct from that, so net we can make a maximum profit of 26,700 if the stock closes or at or above 420 rupees, right. अब डाउन साइड में क्या हो सकता है कि ऑब्वियसली द चांसेस ऑफ लॉस आर अनलिमिटेड theoretically, because if stock goes down below let's say by 100 rupees, तो पूरा आपका 100 rupees फ्यूचर्स में लॉस है, एंड द ओनली मनी दैट यू विल गेट इज 7 rupees का जो भी आपने कॉल ऑप्शन सेल किया है, right, which is again 93 rupees net loss, which is a huge loss, right. So that's why you have to follow strict stop loss and strict targets in this particular case, right. तो टारगेट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं पहले कि क्या टारगेट आप ले सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए,
right? So that's one way of doing it. Let's say you don't want to spend so much capital, currently 1.2 जो आपको दिख रहा है, तो what you can do is इस स्टॉक में अभी हमने सपोर्ट देखा, राइट? इट्स 404. नेक्स्ट सपोर्ट जो हम देखते हैं ना, लेट्स जस्ट सी कि नेक्स्ट सपोर्ट क्या है. So next support comes out to be close to, let's say, 375 rupees. So what you can do over here is you can sell a call of uh, or maybe sell a put of 375 rupees, right? And उसको hedge करने के लिए, अपना margin कम करने के लिए, you can buy another put of maybe 360 rupees, right? So in that case, so total funds needed are 40,000 bucks, and you can make maximum of 1,350 brokerage लाके maybe 1,200 rupees, right? Which will come around to maybe 3% से थोड़ा ज़्यादा for a month, which is not bad if you want to make a safe return, because यहाँ पे probability of profit is 91%, right? And you will be knowing your strict stop losses. So even this is something that you can do. uh, right now, I'm not a SEBI registered advisor, so please do your own research before you take any trades. That's what my suggestion is. But these are some of the strategies what a lot of traders do and follow for taking trades. So these are a couple of strategies that you can use, which I discussed today in your trading if you are a FNO trader. So this is it from today's video. I hope you liked our analysis. अगर आपको अच्छा लगा है तो please do subscribe the channel and like the video and share it with your friends and family who are interested in stock market. And I'll be coming up with more such videos. Number one, next stock is gonna be Reliance, और उसके बाद मैं Infosys के बारे में बात करूँगा in subsequent days. So I'll see you soon. Bye bye.